Okay, so today we want to see how to convert a galvanometer into a voltmeter. कल हम लोगों ने देखा था how to convert a galvanometer into an ammeter. So I will quickly revise yesterday's topic very quick. So the idea was pretty simple. हमको एक गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो द आइडिया वाज वेरी वेरी सिंपल. हमने गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में एक शंट रजिस्टर लगाया था S जिसका वैल्यू स्मॉल होगा क्योंकि द होल पॉइंट बिहाइंड हैविंग अ शंट रजिस्टर वाज अगर ज्यादा करंट आ गया गैल्वेनोमीटर में तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर में हेलिकल स्प्रिंग होता है जो डैमेज हो सकता है. सो टू अवॉइड डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर we give alternate path to the current. That's why we actually put a small resistance S in parallel so that large current can flow through this bypass route. Okay, then what we can see from diagram is I equal to Ig plus Is. Okay, तो इसका जो डेरिवेशन के स्टेप्स है इट इज प्रीटी सिंपल बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ है ही नहीं इसमें. तो आई विल से आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन. फिर ये जो इक्वेशन नंबर वन है इस इक्वेशन वन से we can write Is equal to I minus Ig. So current through shunt is equal to total current minus current through galvanometer. Then since shunt and galvanometer मतलब S और G they are in parallel, मतलब potential drop across G and potential drop across S they are equal. From Ohm's law, potential drop is current into resistance. So for both, it is current into resistance. Our first task is to find out shunt resistance. मैं इसको RS लिख रहा हूँ गलती से. I'll write down S. Okay. Our first task is to find out S in terms of I, Ig, and G. So I don't want to have Is here. So I will replace Is by I minus Ig into S. So what I get from here is S equal to Ig upon I minus Ig into G. Let's say equation number 2. तो हमको शंट रजिस्टर का शंट रेजिस्टेंस का इक्वेशन मिल गया. So now we know how much shunt we have to connect in parallel, मतलब how much resistance we have to connect in parallel to convert a galvanometer into an ammeter. Right. Our next task is to find out Ig current through galvanometer in terms of Sg and total current. So how do we do it? It's pretty simple. We'll start again from this particular equation. Let me say ऐसा करते हैं. I'll call this as equation number 3. Let's say this is equation number 3. Let's say this is equation number 2. So I'll start from equation number 2. From equation number 2, what we had was Ig into G is equal to Is minus Ig into S. So Ig into G plus Ig into S is equal to Is. Therefore, what we will have from here is Ig G plus S equal to I into S. Therefore, we will get Ig as S upon G plus S into total current I. Equation number 4. So this is how you can find out what is the current through galvanometer in terms of shunt resistance, in terms of resistance of galvanometer, and in terms of total current I. Right. Then we know that total current
is equal to some factor into galvanometer current, क्योंकि galvanometer current is a part of total current, so total current can be written as n times of current through galvanometer. You can do this. अब what we want is to find out n, तो इजी है, ये जो I इक्वल टू एन आई जी है ये आपको इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3. सो substituting in equation 3, I will get S equal to Ig upon Nig minus Ig into G. Therefore, you will have S is equal to Ig upon Ig n minus 1 into G. Cancel, cancel. Therefore, you will have n minus 1 equal to G by S, and therefore you will have n equal to G by S plus 1, which will be equal to G plus S upon S. ये आपको मिल गया that factor n in terms of resistance of galvanometer and shunt resistance, equation number 5. Last thing that we wanted to do is to find out what is the current through shunt resistance IS in terms of G and S plus G. ये तो बहुत easy है. So what we'll do is from equation 1 we will write Ig is equal to I minus IS. So this comes from equation number 1, and we also know that हमको ये पता है potential drop across galvanometer is equal to potential drop across shunt resistance. हमको ये पता है this is Ig into G, this is equal to Is into S, but Ig is I minus Is into G is equal to Is into S. Therefore Ig minus Isg is equal to Is into S, right? So then let me make some space first. So let it go behind my video, doesn't matter really. So therefore you will have Is G plus S is equal to Ig. Therefore you will have Is is equal to G upon G plus S into total current I. Equation number 6. So this was all about ammeter जो हमने कल सीखा था. All you are doing is just making equations. आइडिया बहुत सिंपल था कि एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, तो now what we want to do is now we want to convert galvanometer into a voltmeter. ओके, तो हमको हाई वोल्टेजेस मेजर करने हैं. हमको ये पता है कि जब मैं हाई वोल्टेज लगाता हूँ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, तो हेवी करंट, लार्ज करंट पास होता है, जो कि V इज इक्वल टू आई आर है. तो मोर पोटेंशियल डिफरेंस विल मीन मोर करंट. तो वापस प्रॉब्लम वही होगा दैट इफ आई हैव अ गैल्वेनोमीटर और मुझे अगर यहाँ से हेवी पोटेंशियल, लार्ज पोटेंशियल मुझे मेजर करना है, if I want to measure a large potential difference across the terminals of galvanometer, problem क्या होगा? I am connecting a large potential V. प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे मैंने लार्ज पोटेंशियल V कनेक्ट कर दिया, a very large current I flows through this galvanometer. So again you have risk of damaging galvanometer. तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? we will connect a large resistance in series. Why? Because large current in series will allow small current to pass to galvanometer. तो total current I का एक small part Ig will pass through both of this resistance. आपको पता होना चाहिए
when resistances are in series, same amount of current passes through it. Okay, तो हमें एक लार्ज पोटेंशियल मेजर करना था, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, लेकिन मैं लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जब मैं गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करता हूं उस पोटेंशियल डिफरेंस को, लार्ज करंट फ्लो होने लगता है, मतलब अगेन गैल्वेनोमीटर में गेट डैमेज। तो हमने एक हाई वैल्यू रजिस्टर सीरीज में लगा दिया सो दैट करंट IG फ्लोज थ्रू बोथ ऑफ देम। इजी। फिर हमको पता है द पोटेंशियल ड्रॉप, व्हाट वी नो इज, just a minute, what we know is there will be a potential drop across this resistor, and this potential drop you should know, let us say this is VG, so there will be ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। आपको पता है जहां पे भी रेजिस्टेंस और करंट की बात होती है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी VG एंड अक्रॉस रेजिस्टेंस RS पोटेंशियल ड्रॉप लेट अस से विल बी VR। ये तो आपने किरचॉफ्स लूप लॉ से भी सीखा है, राइट। अगर मैं इजी है ना, अगर मेरे पास एक सेल है और मैं वही एक सेल दो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए यूज कर रहा हूं, तो कुछ एनर्जी मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होगा एक कंपोनेंट के अक्रॉस और बाकी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा दूसरे कंपोनेंट के अक्रॉस। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग एंड सिंपल थिंग, राइट। तो ये इजी है, करंट IG विल फ्लो थ्रू बोथ रेजिस्टेंसेस। तो व्हाट वी कैन राइट इज, we can say according to Ohm's law, according to Ohm's law, we can say total potential V is equal to VG plus VR। total potential जो V है उसका जो ड्रॉप होगा will be across G and RS, so VG plus VR। what we know from Ohm's law again is VG is IG into G, I into R होता है ना, प्लस VR is IS into RS, सॉरी IG into RS, क्योंकि करंट थ्रू G and RS is the same। so IG I can take out common, so it will be G plus RS। okay, yes, so up to this point there should not be any problem। मुझे फाइंड करना है RS, while we writing down therefore V by IG is equal to G plus RS, therefore RS will be equal to V by IG minus G। ओके, ये मिल गया आपको रेजिस्टेंस का इक्वेशन। so you have RS, this RS is resistance in series, large resistance in series with galvanometer। okay, so let's see if I can adjust it here, looks like, just a minute, we need some space। okay, good। तो ऐसा है, RS मिल गया हमको, बहुत सिंपल है। वोल्ट मीटर इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू एमीटर। देन व्हाट नेक्स्ट वी विल बी डूइंग इज, जैसे आपको याद होगा एमीटर के केस में मैंने लिखा था टोटल करंट इज n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल वोल्टेज V इज n टाइम्स ऑफ Vg। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट लगाया है, सपोज 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 उसमें से 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ ना 10 इक्वल टू 2 बाई n, लिख सकते हैं हम लोग, इजी है, 2 इंटू n। सेम लॉजिक दैट Vg इज सम फैक्टर into Vg will give you total voltage V। बहुत इजी है, it is quite simple। so now what you can do is, let me just number the equation because I haven't done any numbering for the equations। let us say this is equation number 1,
let us say this is equation number 2. Okay, just a minute. So V is equal to n times of Vg, equation number 3. From equation 2 and 3 what we will have is, सिर्फ ये equation 3 substitute कर देंगे 2 में, therefore you will have Rs is equal to Vg, that is n times of Vg by Ig. सिर्फ V की जगह पर substitute किया, that's it, minus G. Therefore so we have just substituted for V equal to n Vg in equation number 2. Therefore Rs is equal to n, और आपको पता है Vg by Ig क्या होता है, Vg by Ig G होता है, करंट वोल्टेज अपॉन करंट इज रेजिस्टेंस, सो दैट इज G माइनस G. लिख देते हैं यहाँ पे सिंस Vg by Ig is equal to G, therefore you have Rs is equal to n times of, मतलब G times of n minus 1, राइट. सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. तो हमको इक्वेशन मिल गया और एक बार Rs का. We have one more equation for Rs, equation number 4, right? So that is all about voltmeter. What are the functions of resistance in series? आपको याद होगा मैंने कल एमीटर सिखाते वक्त what are the functions of resistance in parallel मैंने ये बताया था it reduces effective resistance of the combination, है ना. मैंने आपको बताया था ना पैरेलल क्या करता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करता है. इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, इट रिड्यूसेस इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, ऐसा बोला था हमने. दूसरा हमने ये बोला था ये एमीटर का रेंज बढ़ाता है. तीसरा मैंने ये बताया था कि ये गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, सो इट प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पार्ट टू करंट. वैसे ही वोल्ट मीटर में जो हाई रेजिस्टेंस Rs आपने लगाया है इन सीरीज, उसके भी 3 फंक्शन है. जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हो तो आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, राइट. सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, राइट. दूसरा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जैसे वहां पे एमीटर का रेंज बढ़ा, यहाँ पे वोल्टमीटर का रेंज बढ़ा. तीसरा, जैसे वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल अल्टरनेट पाथ दे रहा था करंट को और डैमेज होने से बचा रहा था गैल्वेनोमीटर को, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस will also protect galvanometer by not allowing heavy currents to pass through galvanometer. So these are 3 functions of resistance in series, right. बहुत इजी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. देखो क्या है, what we have done is a very simple thing. हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है. हमने एक हेवी रेजिस्टेंस, या हेवी बोलने से अच्छा तो हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया. उसको लगाने से क्या हुआ कि जब मैं अब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो लार्ज करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा. जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होता है. तो गैल्वेनोमीटर से और आरएस में से, दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट आईजी फ्लो होगा. ये जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया है, इट विल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड इट विल ड्रॉप अक्रॉस आरएस. तो मैं लिख सकता हूं V is equal to Vg plus VR. By Ohm's law, Vg is current into resistance, so Vg is Ig into G and VR is Ig into RS. Ig कॉमन निकल गया, V is equal to Ig G minus R, G plus RS, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया. तो हमको यहाँ से सिर्फ मॉडिफिकेशन करके, सिंप्लीफिकेशन करके we get Rs equal to V upon Ig minus G. But the potential drop across galvanometer into a factor n is equal to total potential drop V. So V is equal to nVg. ये आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको मिलेगा nVg by Ig minus G equal to Rs. तो आपको Rs मिल गया, nVg by Ig is again capital G, तो Ng minus G
तो take out G common, तो n minus 1. Then what are the functions of this resistance in series? First, to increase the effective resistance of galvanometer. 2, to increase the range of voltmeter. 3, to protect the galvanometer from damage due to large current. So these are the three functions of resistance, right? So if you know this much, now what we can do is we can compare voltmeter and ammeter. So let's quickly compare voltmeter and ammeter. I'll make a table of comparison और बहुत ही simple है ये. Okay, I don't know what happened. Just a minute. Okay, so we will just compare ammeter and voltmeter quickly. There are just a few points of comparison. ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें और बहुत सिंपल है. So, okay. So let's start comparing these two. Ammeter and voltmeter. First point, voltmeter. First point. Ammeter measures current, voltmeter measures voltage or potential difference. So it measures current and this one measures potential difference. It measures potential difference. Point number 2, हम जो resistance connect करते हैं ना, okay, that resistance is sometimes also called as ammeter. मतलब जो शंट आपने कनेक्ट किया था, बहुत सारे बुक्स में उसी को एमीटर बोल दिया है, इसलिए बोलते हैं इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, ऐसा बोलते हैं. और जो रेजिस्टेंस आपने सीरीज में कनेक्ट किया बहुत बार उसको वोल्टमीटर बोल देते हैं. तो मैं ऐसा बोलूंगा अ स्मॉल रेजिस्टेंस S is connected in parallel to moving coil galvanometer MCG. It is not Melbourne cricket ground, it is moving coil galvanometer. So a small resistance S is connected in parallel to moving coil galvanometer, is connected in parallel to moving coil galvanometer to convert it into ammeter, to convert it into ammeter. Similarly, यहाँ पे a large resistance is connected in series, a large resistance RS is connected in series to moving coil galvanometer
to convert it into voltmeter. Okay, what we can write in third point of differentiation. Okay, हम बोल सकते हैं जितना शंट रेजिस्टेंस, जितना पैरेलल रेजिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं. स्मॉलर द शंट रेजिस्टेंस S, greater will be the current measured. Greater will be the current measured. थर्ड, यहाँ पे थर्ड, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हो. लार्जर द रेजिस्टेंस RS, greater will be the potential difference measured. Greater will be the potential difference PD measured. ये potential difference है, पेन ड्राइव नहीं है. Okay, next, what you can do is we can write down the formulas for shunt and for RS. So if you remember shunt S, equation for shunt S हमने derive किया था. Where is it? You can write down this particular equation for shunt S के लिए equation derive किया था. Let me see, कहाँ गया, disappeared or what? S equal to Ig into G Is, ये रहा. So you can write down this equation for shunt, or you can simplify and write down other formulas for shunt also. So you can write down S equal to Ig upon I minus G into G. And here you can write down this one, Rs equal to V by Ig minus G. V by Ig minus G. हो गया टेबल ऑफ कंपैरिजन, राइट. तो इजी है, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग, बहुत सिंपल सा टेबल है. यू कैन कंपेयर. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज एग्जाम्पल्स. तो वी हैव finished the theoretical part. Now we are moving ahead with numericals. जो बचे हुए हमारे numericals है वो. So let's start with solving numericals one by one. Example 9.7. In an experiment to determine the internal resistance of a cell of EMF 1.5 volt, the balance point in the open cell condition is at 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter of the potentiometer wire. Determine the internal resistance. सबसे पहले ये करने के लिए you should remember, आपको याद होना चाहिए what was the diagram for measurement of internal resistance of a cell. तो एक मिनट, I will just copy that diagram and paste. So here we have that diagram, and better if I can have this. Yes.
ओके, just a minute. I don't know why these things keeps on happening. Okay, so you must remember this particular diagram. आपको याद होगा इस डायग्राम में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला है द बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन। ओपन सेल मतलब यह जो की है ये ओपन है, सो दिस की इज ओपन। ओके, ओपन सेल कंडीशन इसको बोलते हैं। फिर आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, दैट देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। फिर हमने नल पॉइंट ढूंढा था और एपी इस लेंथ को हमने बोल दिया था L1। तो L1 आपको दिया हुआ है 76.3 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने आपको ये बताया है, दे आर टेलिंग यू कि अब आपने सेल को कर दिया है, की को कर दिया है क्लोज। मतलब व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओहम, मतलब आर की वैल्यू आपको दी है 9.5 ओहम। जब आपने ये की K1 क्लोज किया है, उस केस में जो नल पॉइंट था, मतलब P डैश पॉइंट जो था, ये लेंथ ऑफ AP डैश L2 इज इक्वल टू 64.8 सेंटीमीटर आता है। एंड गिवन दिस मच, और आपको ये भी बताया है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ। मतलब ये E1 की वैल्यू भी दी हुई है आपको। यहाँ पे जो E1 दिख रहा है आपको, ये जो सेल है यहाँ पे, दिस सेल विथ E1, ओके, उस E1 की वैल्यू आपको दी है 1.5 वोल्ट। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट स्मॉल r, ओके, राइट। तो हाउ डू यू फाइंड आउट स्मॉल r? It is simple. So what you can do is you just have to remember formula. I don't know if you remember or if you don't remember. आपको small r का formula पता होना चाहिए, L1 minus L2 by L1 into capital R। ऐसा फॉर्मूला था, अगर नहीं याद है तो आई शो यू, हमने डिराइव किया था। सो इट वाज ओवर हियर that you write down L1 minus L2 upon L2 into capital R. So you need to remember formulas as well. तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा L2. So solution is very simple. R is equal to L1. L1 is 76.3 centimeter minus L2 is 64.8 centimeter upon L2, and L2 is 64.8 centimeter into capital R is 9.5. So capital R is equal to 9.5. You have to solve this, find what is the value of R, क्योंकि इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। extremely simple question it is। Okay, so let me check what value they are giving you, 9.7. After solving everything, you should get 1.686 ओहम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड यू रिमेंबर फॉर्मूलाज, राइट, यू रिमेंबर डायग्राम, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन सेल कंडीशन। मतलब Q1 को हमने ओपन रखा था, तो दीज आर सम कंडीशंस दैट यू नीड टू नो। उसके बिना नहीं होगा। अगर आपको ये याद नहीं what is open cell condition, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। So you need to remember this. Next question. तो open cell मतलब you are not putting anything here, the key is open। और जब आपने की को क्लोज किया मतलब you have closed this, मतलब now
resistance R is into the circuit. Next question. A galvanometer has a resistance of 100 ohm. And its full scale deflection is 100 microampere. What shunt should be added so that the ammeter can have a range of 0 to 10 milliampere? अभी अभी हमने ये थ्योरी लिखा है, हमको बोला है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मतलब G is 100 ohm, right? Then what else they have given you? It's full scale deflection. जब full scale deflection of galvanometer बोला हो मतलब current through galvanometer होता है. So when they tell you that it's full scale deflection, that means they are giving you current through galvanometer which is 100 microampere, which is 100 into 10 power minus 6 ampere. So that is 10 power minus 4 ampere, by the way. Okay, right. What shunt should be added? Okay, तो आपको find करना है shunt मतलब S should be added so that the range of ammeter is 0 to 10 milliamp. 0 to 10 milliamp. By the way, this is 0.1 milliampere. 10 per minus 4 मतलब 0.1 into 10 per minus 3 मतलब 0.1 milliampere है ये. Okay, तो how do we solve this question? What formula are we going to use to find out shunt? अभी अभी हमने ये किया. There are like IG I minus IG into G, या ये भी यूज कर सकते हो S के लिए, या फिर you can also use a formula from here ये भी कर सकते हैं, but I would prefer that you go with this formula S equal to IG upon I minus IG into G, राइट. फिर बोलोगे I क्या है? उन्होंने बोला है एमीटर का रेंज मतलब 10 मिली एम्पियर होना चाहिए, मतलब 10 मिली एम्पियर इज टोटल करंट, ऐसा उन्होंने बोला है, दिया है. So it is easy. So you just have to put values here. S is equal to IG upon I minus IG into G. IG is 0.1 milliampere. I is 10 milliampere. 10 minus 0.1 milliampere. milliampere ये मिली जो है ये कैंसिल होंगे, तो याद रखना. That's why I am not writing it here. एम्पियर में कन्वर्ट नहीं किया इसलिए. G की वैल्यू 100 ओहम है, तो you have to do this calculations now. 0.1 upon 10 minus 0.1 is 9.9. तो 0.1 upon 10 minus 0.1 ये आपका आ जाएगा 0.0101 इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लोगे तो 1.01 ohm should be the shunt resistance that you should be getting. Easy, right? क्या था? Nothing. You just have to remember formulas. That's it. इतना ही पता होना चाहिए था आपको. Next, what is the value of shunt resistance that allows 20% of the main current through galvanometer? What should be the value of shunt which allows 20% of the main current through the galvanometer? मतलब IG is 20% of I, मतलब IG is equal to 20%, मतलब पता होना चाहिए आपको 20 by 100. So it is 20 by 100 times of I, मतलब basically 0.2 times of I.
राइट। और आगे बोला है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 99 ओहम। सो व्हाट शुड बी द शंट, वापस से वही चीज है, you are supposed to find out shunt S, and you know the formula already for shunt, that is S equal to Ig upon I minus Ig into G. Then you already know this, Ig is 0.2 times of I, and I जो भी I होगा I minus 0.2 times of I into G is 99. So this is 0.2 times of I upon 0.8 times of I into 99. So that is 2 by 8, that is 1 by 4. So this is equal to 99 by 4. मतलब around 25 आंसर आएगा, 24.75 ओहम आंसर आएगा, right? So this is how you will be solving such kind of questions. Okay, so pretty simple thing. We will stop here for the day.